अरे कौन कौन हाई बोल रहा है, मेरे को भी बता दे रहे ना थोड़ा। हेलो 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 हेलो। हाय एवरीवन। सो वी स्टार्टिंग, ठीक है। ललिता, नदी, ठीक है। सो फर्स्ट वर्ड दैट कम्स व्हेन यू थिंक इंजीनियरिंग, क्या लगता है? क्या करते हैं इंजीनियर्स, क्या करता है? हम्म। हम्म। सो आईटी, सिविल एंड बिल्डिंग स्टफ, राइट? सिविल में बिल्ड करते हैं, इंजीनियरिंग में बिल्ड करते हैं। और कौन से इंजीनियरिंग के टाइप होते हैं? इलेक्ट्रिकल होता है, राइट? आईटी, कंप्यूटर एनालिटिक्स, इलेक्ट्रिकल। सो राइट, सो बिल्डिंग स्टफ, हर बार योर बिल्डिंग स्टफ, दैट इज कि इंजीनियर्स यूजुअली क्या होता है कि यू हैव मल्टीपल डिफरेंट एरियाज, राइट? अपने पास एक तो है कि देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंट इंजीनियरिंग स्टाइल्स, बट कोर कोर अपना जो है इंजीनियरिंग में क्या होता है, इट इज यू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड यू बिल्ड स्टफ, राइट? एक है कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जो पूरा डिग्री में यूजुअली ये सिखाता है कि भाई थिंकिंग लॉजिक क्या होना चाहिए, प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करता है, राइट? कौन सा वो स्ट्रीम में, वो पर्टिकुलर स्ट्रीम में, या तो अपने ने इलेक्ट्रिकल लिया है, सिविल लिया है, जो भी स्ट्रीम लिया है, उसके प्रॉब्लम्स कैसे एक तो सॉल्व करता है, कैसे सोचना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ थिंकिंग, राइट? एंड द अदर पार्ट इज कि हम लोग वर्ल्ड के काफी बड़े बड़े जो प्रॉब्लम्स होती है या क्रिएट करनी होती है चीजें, एनीथिंग फ्रॉम ब्रिजेस टू बिल्डिंग्स टू इलेक्ट्रिकल सर्किट्स टू एवरीथिंग एल्स, राइट? सो बिल्डिंग स्टफ and how to build that is what we're doing, right, for engineering. So before we go into that कि कौन से ट्रेंड्स आपने देखे हैं, सो इंजीनियरिंग में क्या क्या ट्रेंड्स देखे? ट्रेंड्स, सो ये तो टाइप हो गया, मैकेनिकल एंड ऑल इज अ टाइप ऑफ इंजीनियरिंग। ट्रेंड्स क्या देखे फॉर इंजीनियर्स टुडे? AI development, right? So new technologies are coming in. So cyber security has become very important. पहले भी important था, पहले भी security was very important, पर with newer technology, जो हैकर्स होते हैं उनके पास अच्छा टेक्नोलॉजी, क्योंकि सबके पास ही नया टेक्नोलॉजी आया, राइट? सो एनीवन एंड एवरीवन कैन ओवर टाइम एक्सेस न्यू टेक्नोलॉजी, राइट? सो जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव क्वांटम कंप्यूटर्स व्हिच इज वेरी लिमिटेड। अभी कैसा है कि बड़े यूनिवर्सिटीज में रिसर्च एरियाज में ही सिर्फ अपने पास ये क्वांटम कंप्यूटर्स है, right? But now you're seeing that multiple different companies वो क्वांटम चिप्स पे काम कर रहे हैं, क्वांटम टेक पे काम कर रहे हैं, राइट? सो बेस्ड ऑन दैट साइबर सिक्योरिटी विल बी अ वेरी फील्ड, राइट? दैट इज वन बिग फैक्टर। दूसरा है कि वी हैव एआई टेक्नोलॉजीज, राइट? सो एनीथिंग फ्रॉम कंप्यूटर साइंस, आईटी रिलेटेड स्टफ, वो सब में देयर इज अ बिग चेंज इन द रोल दैट दे डू, राइट? सो इट्स नॉट जस्ट कोडिंग एनीमोर, इट इज कोडिंग विद असिस्टेंट्स। इट इज कितना हमारा uh, हमारा स्पीड एंड प्रोडक्टिविटी एज अ कोडर विल बी वेरी डिफरेंट नाउ, क्योंकि क्या होता है कि एआई असिस्टेंट आ गए, तो कोडिंग में आधी चीज एआई बनाएगा। फॉर एग्जांपल दिस पेज, ये पेज किसने बनाया? मैंने नहीं बनाया। इट वाज सो जेमिनाई, सो आई पुट बेसिकली, मैंने एक ऐसा तीन चार सेंटेंस डाला कि इंजीनियरिंग रिलेटेड आई हैव दिस होल रिपोर्ट, मैं अपने पास जितना इन्फॉर्मेशन था मैंने उसमें डाला, उसको बोला कि इसमें से तू वेब पेज बना, एंड इट मेड दिस within 3 minutes, right? This would take maybe 4 5 hours minimum for someone to make this stuff, but you're seeing it's very clean, very interactive and very easy to create, right? But this is not engineering, ये कोर्स अपना मेन आइडिया है कि बाहर जाता है अगर whoever studying outside, whoever studying abroad, तो उसके लिए इंजीनियरिंग में क्या क्या ऑप्शंस है, what countries should they look at, what careers should they look at, right? And what type of jobs should they be mindful of? इसमें हम लोग और भी डिस्कस करेंगे कि कौन से डिफरेंट एरियाज ऑफ इंजीनियरिंग है जो इमर्जिंग है, right? Which is new age engineering programs that people can take, as well as students what they should be looking at when you're deciding कि कहाँ जाना है, कौन से कंट्री में इंजीनियरिंग करना है, right? So US is obviously one of the biggest
markets that pays you really well, right? Highest paid market for engineers is US. And as you can see, so there's about 100 and well, 200,000, so 2 lakh jobs openings for engineers of different kinds. So it includes civil, it includes electrical, it includes all of these engineers. But it's around 2 lakh openings, right? So this is not full jobs. These are openings. Median annual salary, yeah, wages up देखे, so it's around 91,000 when you compare it with average salaries in US. So this is average median salary in US, which is around 50,000. पर average अगर engineer का देखे, that is around 92,000, right? क्या हो गया? है ना, like, ठीक है. So, salary comparison and what is expected. So, obviously, one of the biggest engineering का जो field है, which is computer science and technology, that is expected to grow by 25 to 30%, which is a very big percentage when you compare to any other industry. But it is also very surprising because already tech is very big, right? So, what does this actually mean? Does it mean कि entry level jobs बढ़ेंगे? क्या लगता है? कि is it mid tier jobs or senior level jobs or entry level jobs, right? Mid tier jobs, mid tier meaning कि you can efficiently code something that at a very good speed and at a very good pace, right? And दूसरा कि you can develop technologies across different sectors. So basically, for example, service businesses, right? Currently क्या होता है कि सर्विस बिजनेस में बहुत सारे मैनुअल प्रोसेस होते हैं, सो फॉर्म भरना, फॉर्म लेके जाना, या तो क्लाइंट को सर्विस देना, उनको एक रिसर्च करके देना, वो सब, राइट? ऑल ऑफ दैट इज वेरी मैनुअल वर्क. So even that becomes simplified with tech, right? It becomes simplified with new technologies. उसका क्या मतलब हुआ कि there is new jobs being created in industries जहाँ पे पहले नहीं थे jobs, right? That is what it means by growth. It doesn't mean कि number of entry level jobs increases, right? But it means कि if you can build enough enough वैल्यू, सो सर्विस बिजनेस में अलग वैल्यू क्रिएट किया, कोई अलग इंडस्ट्री में, सो फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग हैज डिफरेंट वैल्यू, राइट? बट यू नीड दीज पीपल टू नाउ कम इन एंड बिल्ड स्टफ फॉर यू टू बी competitive, राइट? सो दैट्स वेयर द ग्रोथ कम्स इन. इट्स नॉट एंट्री लेवल जॉब्स. एंट्री लेवल जॉब्स में क्या होगा कि अभी विल गेट टू दैट, विल गेट टू द एंट्री लेवल जॉब्स. So that is market dynamics, right? Hot engineering disciplines. What does that mean? Emerging markets, जो है, which obviously first thing that we've written is AI and machine learning. Second is data science and analytics, right? So analytics will change across fields as well. So it's marketing mein analytics will change completely. Sales mein it will change completely, right? So business side also there's a lot of analytics and data science that goes in. Cyber security engineering, like we talked, ki, because of how even countries are going, right? Like if अगर चाइना को अगर किसी पे अटैक करना है या any country wants to do a cyber attack, that country itself has to have government positions for cyber security because they need to protect their software, right? They need to protect their population as well, right? So including India, India will also need that, right? So then there's renewable and sustainable engineering, right? That is a very different field, which is a fast growing field. So अगर देखा होगा कि हर एक country में there are targets, और हर एक कंपनी में there are targets. So for example, Apple set carbon neutral until 2030, 2050, right? All these big companies are setting up carbon neutral targets. Countries are setting up targets, right? उसका ट्रेंड ऊपर नीचे होता है, पर कॉन्स्टेंटली जनरली ओवर द वर्ल्ड ये एक कॉमन थीम है कि रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल इंजीनियरिंग इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर गोल्स, right? So that's a very fast growing area. And then there's robotics and automation, right? So robotics and manufacturing is the first area. Self-driving cars side is the first area where they use all these different tools and techniques for automation in machines, right? So automation in machines, automation in robotics.
is a very big field. There's a concept, ये concept है कि T-shaped engineer. So any student that is pursuing engineering, उनके लिए अब इतना इनफ नहीं है कि सिर्फ मेरे को मेरे फील्ड के बारे में पता हो, राइट? सो इन डेप्थ होगा कि इन डेप्थ हमने एक इंजीनियरिंग डिग्री किया, वो इन डेप्थ मेरे को बहुत पता है, राइट? सो दैट इज द डेप्थ. बट द टी, ऊपर का जो ओवरव्यू है, वो ओवरव्यू काफी अलग अलग पता होना चाहिए, अलग अलग स्किल्स का पता होना चाहिए. व्हाट डज दैट टी मीन? इट इज ह्यूमन स्किल्स, राइट? सो इंजीनियरिंग इज टेक्निकल, ठीक है. पहले इनफ होता था कि मेरे को टेक्निकल पता है, मेरे को आता है, तो मेरा हो जाएगा, कहीं मैं जॉब कर लूंगा, मैं यहाँ पे कर लूंगा, राइट? बट दैट इज नॉट इनफ एनी. You need technical, but you also need human skills, critical thinking, analysis, understanding कि मेरे जो tools है मैं कैसे use करके इसका best solution बना सकता हूँ, right? Which is why entry level jobs will be very difficult, because entry level पे वो skills, एटलीस्ट इंडिया में हम जब देखते हैं कि कोई ग्रेजुएशन करता है, यहाँ पे जब इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन करता है, तो दो स्किल्स आर रिक्वायर्ड टू एनालाइज, फॉर क्रिटिकल थिंकिंग, दैट इज ऑल लैकिंग, क्योंकि वो एजुकेशन में एक्सपोजर नहीं होता, राइट? यू डोंट हैव दैट फ्रीडम टू एक्सप्लोर इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट्स, राइट? हैकेथॉन्स एंड स्टफ. हैकेथॉन्स होते हैं काफी यूनिवर्सिटी में होते हैं, पर अगर तुम अच्छी यूनिवर्सिटी में हो, अच्छे रैंक, तुम्हारा अच्छा रैंक आया जेईई में, राइट, देन यूर इन दीज यूनिवर्सिटीज, वहां पे होता है 100%. पर बिलो दैट, वो जो एक्सेस होता है, that is something that you get in these universities, maybe in US, in Canada, in Australia, UK, Germany. All these universities force you to do projects, force you to do interdisciplinary stuff, force you to be exploring other stuff, right? सिर्फ टेक्निकल नहीं, पर तुम्हें मल्टीकल्चरल लोगों से बात करनी है, राइट? यू डेवलप दोस कम्युनिकेशन स्किल्स, तुम्हें प्रेजेंट करना है, राइट? यू टेक पार्ट इन डिफरेंट कॉम्पिटिशंस, यू टेक पार्ट इन डिफरेंट क्लब्स. So you develop that human skill, you develop that analytical skill, right? These educations are outside, in these university that you select based on कौन सा university select कर रहे हैं, उसमें you are required to be analytical, right? You can't just copy paste stuff, you can't just know stuff. And obviously यहाँ पे भी, if you're doing engineering, you have to think, you have to do problem solving. But there it's more, okay, problem solve किया, पर ये problem क्या सही solution है? That no one thinks here. That is required when you go out, right? क्या ये सही solution है? कुछ और भी कर सकते हैं, कुछ better कर सकते हैं, right? All of that is a skill, the T that is required, जो ऊपर का जो T है, after you know engineering, right? So what are we seeing is rise in sustainable green energy, green engineering, right? Uh, Green engineering basically means anything from renewable sources, जैसे solar, right? Energy engineering, right? Where you look at different sources, hydro, solar, all these different sources है, उसको, उसमें से हम लोग पावर कैसे हार्नेस करते हैं, right? That is a simple thing. But how do those grids work, right? कि वो पावर स्टोरेज कैसे होता है, उसका ट्रांसफर कैसे होता है, how do you set up scalable systems there? All of that comes under sustainable engineering, green engineering. ठीक है? What is the impact of AI and big data? I think सबने देखा होगा, but what it really means is that your requirement as a graduate, जो तुम्हारा परफॉर्मेंस है, जो तुम्हारे स्किल्स रिक्वायर्ड है, वो बेस जो पहले था उससे कहीं ज्यादा रिक्वायर्ड है फॉर एंट्री लेवल जॉब्स. एंड हाउ डू यू गेट दैट? इज थ्रू इंटर्नशिप्स, थ्रू कोऑप्स. इंटर्नशिप कोऑप में ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं होगा, पर आफ्टर दैट व्हेन यू गो इनटू द जॉब मार्केट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हिच इज व्हाई व्हेन अ स्टूडेंट इज इन यूनिवर्सिटी, number one thing they can do out and not do part time and actually work on projects, actually work on developing those, uh, their portfolio, right? Portfolio of internship, portfolio of co-ops, ये सब करेंगे तो वो एक्चुअली एंट्री लेवल जॉब में मिलेगा. So anytime you're, anytime you're thinking about a degree, anytime you're thinking about कि मेरे को क्या करना है, पहले जैसा नहीं है कि ऐसे मस्त डिग्री किया और जॉब मिल जाएगा, ऐसा नहीं, right? You have to have these skills, you have to have that experience before you even graduate, right? That is required. But we're seeing that that will still be okay if you're maybe in AI and ML, right? So अगर आपको आता है basic skills,
companies might still be okay for you to learn while you are at the job. क्योंकि क्या होगा, AIML specialist का demand ज़्यादा है, right? You won't have enough trained people in that field yet. Over time फिर उसका सेम होगा कि जो हायर होंगे उनके पास अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, अच्छा स्किल होना चाहिए, या तो बेसिक उनको आना चाहिए कि कैसे टूल्स यूज करना है. पर गोइंग फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट 2-3 years दे विल बी ओके टू बी एंट्री लेवल जॉब्स एंड वो मिल जाएगा तो भी. But they still have to know the concepts. They still have to be trained on it. They still have to be using all these new tools. They should be using, Chat GPT APIs, Claude, Gemini, all these different tools. They have to be knowing, right? How to use them, how to build applications through it. So we talked about it, right? कौन से critical skills है? क्या skills रखता है? ये तो मैंने आंसर दे दिया थोड़ा, पर क्या skills रखता है? जो ना लाइव में देखा है ना, क्या बोल रहे हैं लोग, मेरे को एक्चुअली एक्सेस नहीं है इंस्टा पे. इंस्टा पे है, फेसबुक पे है, राइट? व्हाट आर वी सीइंग, व्हाट आर द स्किल्स रिक्वायर्ड? या व्हाट आर द स्किल्स रिक्वायर्ड? So analytical skills and all is engineering technical side, right? I mean problem solving and all. What else? इंस्टा पे डिले भी है थोड़ा, फेसबुक पे भी. ठीक है. So human skills are what? काउंसलर्स को भी स्टूडेंट्स को बोलना है कि क्या रिक्वायर्ड होगा, क्यों जाना है. कम्युनिकेशन, लीडरशिप, क्या, फिर और कुछ, नेगोशिएशन, अंडरस्टैंडिंग हाउ टू वर्क विद अ टीम. या how fast do you learn, how adept are you with new tech, right? Adaptiveness. What else? Resilience is very important. Resilience का क्या मतलब है कि अभी currently in the next 4, 5, 6 years बहुत changes आने वाले in job market, in work policies, in different stuff, right? So resilience is basically कि हम लोग ने future ready skills adapt किया है, and we're ready कि कोई भी change आए तो हम लोग उसके साथ move करके we can still get those jobs. We can still, be comfortable in these positions, right? Be comfortable with change, be comfortable with getting new skills, resilient to change, right? हमारा जो गोल है वो तो मैच करेंगे ही हम लोग. Digital fluency, right? System thinking and integration, innovation and entrepreneurial spirit, right? That is very important when there's change. कि इनोवेशन में क्या लाऊंगा जिससे आप रेजिलियंट रहोगे, कि मैं खुद का इनोवेशन ऐसा लाऊंगा कि मैं इरिप्लेसेबल हो जाऊं. In any job, in any field that you're in, you have to have these skills, right? So how should you plan for it, right? What exams are required? In which countries, what exams are required? Usually for engineering, GRE is required, right? If you're going to top universities, and GRE is required. And English language testing is usually the biggest area. अगर Germany जा रहे हो, then you need that 13th year of education, and then you can do it. That 13th year is this Studien Kolleg, जो भी बोलते हो उसको. And IELTS, right? English exams. So top global career hotspots for engineering. What does this mean? Most engineers कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं, right? So that is okay. We have US, Canada. I mean, these are mainly countries, and this is a comparison of annual salaries. Right? So these are different countries and an annual salary based on these countries, right? So as you can see, US is a lot more comfortable paying engineers, right? They pay engineers a lot more. Then it's Australia, then it's Germany and Canada, and then UK, right? And then you see India's salary. I mean, obviously, this is not a comparison.
परचेसिंग पावर पैरिटी पे नहीं है, राइट, विच इज व्हाट टेल्स यू कि अच्छा जो हमारा सैलरी अर्न करे वर्सेस द एक्सपेंसेस दैट यू हैव, इज दैट मैचिंग, राइट? सो वो कंपैरिजन नहीं है, दिस इज एब्सोल्यूट कंपैरिजन. You should look at purchasing power parity as well. But this is what experienced we're saying, right? Experienced versus other field, which we're not looking at experienced. Because if you see engineers, especially in hardware or software in US, it is not 130. It is way more than 130 when it's experienced people, right? So this is not a uh, it's not a fair comparison because it's not purchase power parity, but it's still a decent comparison to look at for different countries like US, Canada, Germany. उसमें अच्छा comparison, right? Right. So this is what it's still saying, right? But it talks about visas. So what we're seeing is like US में कौन सा visa होता है for engineers and what industries are big? What industries are big in US for engineers? Yeah, tech. What else? Mechanical is probably bigger in Germany. US has aerospace, very big, right? What else? EVs, sustainable tech, semiconductors, right? What else? Research focused roles, material science, all these research focused courses, right? Uh, Canada is also big on software, electrical, right? Yeah, civil is very big. They need construction. They do a lot of it, all right? So even traditional sense, civil is very important. Clean energy. Canada runs on natural resources usually, right? Hydro, solar, all these different natural resources. Then Germany, mechanical, automotive, right? Automotive, cars and all, automation, renewable energy as well, and IT tech, right? AI, right? Computer science. Australia, yeah, construction, mining, data science, construction, civil, yeah, mining, and then software, right? Renewable energy as well, right? They have a lot of space. UK, what else? Cyber security, robotics, hmm? Data engineering, right? What else? Advanced manufacturing as well. Design and manufacturing. Design is also very big. So design engineering, systems thinking, right? That's very big. India, IT software. What else? B2B software is very big in India. India to the world, right? Manufacturing, very big manufacturing industries as well, right? So students can also go out, study engineering, study manufacturing, bring that back here and have very big advantage, right? अभी आज ही announce हुआ कुछ. Apple's putting in 1.5 $1.5 billion in manufacturing in India, right? They've given it to a company, right? So manufacturing might be a very big thing going forward in India as well. देखते हैं how it goes on. It could be very big, right? So now there's yeah, handle कर सकते हो क्या? Hmm. Right. So what we're seeing is emerging engineering frontiers, right? What all can you do in engineering? So there's AI ML, right? AI ML engineering, renewable, sustainable that we talked about, biomedical engineering and health tech. That is a massive field. It is coming up, right? अपने genomics अगर देखे कि कितना advancement वहाँ पे, especially when they're looking at genetic diseases, right? So when क्या होता है कि when you're based on your DNA, based on your genome, you get diseases, inheritance होता है, राइट? काफी को डायबिटीज भी होता है, पर डायबिटीज से ज्यादा सिवियर भी डिजीजेस आते हैं, एंड दे आर वर्किंग ऑन दैट टू फिक्स दैट, राइट? सो दीज डिफरेंट एडवांसमेंट्स इन हेल्थकेयर एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग इज अ बिग फील्ड. एंड उसमें क्या होता है कि यूजुअली बिकॉज
इतने लोग कर नहीं पाते, इट बिकम्स अ वेरी गुड स्ट्रेंथ, राइट? इफ यू नो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कैन डू इट, इट्स अ वेरी बिग स्ट्रेंथ. फिर है हमारे पास राइट साइबर सिक्योरिटी इंजीनियरिंग, देन देयर इज रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, राइट? देयर इज एडवांस्ड मटेरियल्स एंड नैनोटेक, राइट? एडवांस्ड मटेरियल्स एंड नैनोटेक, व्हाट डू यू नीड टू स्टडी फॉर इट? क्या पढ़ना चाहिए? एडवांस्ड मटेरियल एंड नैनोटेक. So you become a material scientist, you become a nanotech engineer, R&D engineer. क्या करना चाहिए? You can study material sciences, right? You can have masters in specific, like with research in these different areas, in material science, in different. You can also have chemistry. So chemical engineers have an understanding about foundational materials, as in कि क्या combinations होते हैं. So material science also involves कि currently there's a big research in developing new materials. उसका मतलब क्या कि अपने पास जो है कि जैसे प्लास्टिक है या स्टील है या जो भी है, उसके सिवाय कौन से नए मटेरियल बन सकता है. That is a big research area that will come up, that is coming up now, that will come up in the next decade, right? So if students are considering bachelors and masters, they can go into masters with research in these areas, all right? Civil engineering, but civil engineering with also smart cities, that is the emerging side. Obviously civil normal is also there, बट स्मार्ट सिटीज उसमें क्या आता है कि दे काफी जगह पे ऐसे सिटीज बना रहे हैं जहाँ पे वो टेक यूज करके उन टेक एंड प्लानिंग ऑफ द सिटी इटसेल्फ वो यूज करके दे डेवलपिंग रियली गुड लिविंग स्पेसेस. सो ये लोग कंपनीज भी कर रहे हैं. सो कंपनीज themselves वो लोग खुद के एम्प्लॉयज के लिए सिटी बना रहे हैं. एंड ऑब्वियसली यू आर सीइंग इट इन मिडिल ईस्ट, वो एक प्रोजेक्ट आया था. देयर इज अ लॉट ऑफ एरियाज इन नॉर्थ अमेरिका, इवन इन इंडिया. यहाँ पे जो गिफ्ट सिटी है वो लोग को बनाना है, या तो जो स्मार्ट सिटीज वो डोलेरा साइड बनाना है गुजरात में बोलते तो, राइट? उन लोग को बनाने हैं स्मार्ट सिटीज, राइट? सो दैट इज व्हाट दिस सिविल इंजीनियरिंग इज, अ बिग स्पेस और स्मार्ट सिटी प्लानर, राइट? There is mechanical engineering, electrical engineering, chemical, transportation. But each of these have different areas with high growth as well, right? So mechanical have advanced manufacturing methods and mechatronics. Electrical has smart grids, IoT, right? EVs. So this web page will share it with everyone that wants it, right? On if they message us for it. But what they'll see कि कौन से different एरियाज में कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड है, कौन से पोजीशंस होते हैं, एंड what type of outlook there is, right? So all of this is on this web page that we built. Also all AI. So that's pretty crazy. And then we have mining engineering and quantum engineering. ठीक है? So when you're looking at कि मेरे नेक्स्ट 10 साल में कौन से जॉब्स होंगे, नेक्स्ट 10 साल में कौन से मेरे को स्किल्स चाहिए, कौन सा मास्टर्स मैं करूँ, these areas will lead to a lot of benefit. Right? Whenever someone's thinking about engineering aage, these areas lead to a lot of benefit. Right? So how do you plan this? That is always the last thing in our seminars is how do you plan for this? What do you do? Right? So first thing is obviously self-assessment. क्या स्ट्रेंथ है मेरे, क्या इंटरेस्ट आता है, कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, राइट? क्या फील्ड पसंद है, किसी को बातें करना पसंद है जैसे मेरे को पसंद है, राइट? क्या क्या पसंद है खुद को, इंटरेस्ट क्या है खुद के, राइट? मेरे को शायद लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ लोग को बहुत अच्छा आता है और कुछ लोगों को कुछ पता नहीं चलता. कुछ लोगों को फिजिक्स बहुत अच्छा लगता है और बाकी कुछ पता नहीं चलता, राइट? सो ऑल दीज डिफरेंट स्ट्रेंथ्स यू हैव टू आइडेंटिफाई कि मेरा कौन सा स्ट्रेंथ है. उसके बेस पे यू हैव टू रिसर्च पाथवेज. सो इट कैन बी फ्रॉम दीज इमर्जिंग पाथवेज, इट कैन बी समथिंग फ्रॉम फाउंडेशनल जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, उसमें भी हो सकता है, राइट? डिपेंड्स ऑन व्हाट देयर गोल इज. तो उसमें भी हो सकता है. एंड देन यू बेसिकली अंडरस्टैंड मार्केट कौन से बाजू जा रहा है, मार्केट या तो वर्ल्ड. वी हैव टू लुक एट व्हाट द वर्ल्ड इज, वेयर इज इट गोइंग, राइट? उसके बेस पे वी आर लुकिंग एट कि करियर पाथ कौन सा है. देन द थर्ड थिंग इज वंस यू फिगर्ड आउट कि भी 5 जगह अच्छी है, मेरे को अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे वर्ल्ड जा रहा है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स हम लोग को क्या दिख रहा है, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में लॉन्ग लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स क्या दिख रहा है, फॉर
biomedical engineering, what are we seeing? उसके बेस पे we have to understand what skills are required for that path. कि मेरे को रिसर्च में ज्यादा अच्छा होना चाहिए, या तो मेरे को कोई नए टूल्स में ज्यादा अच्छा होना चाहिए, या तो मेरे को कोई एनालिटिकल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। स्मार्ट सिटी के लिए मेरे को प्लानिंग का बहुत अच्छा आइडिया आना चाहिए, सिटीज कैसे काम करते हैं मेरे को आइडिया आना चाहिए, राइट? सो ऑल दीज डिफरेंट स्किल्स यू कैन प्लान बेस्ड ऑन कि देखो मेरे को स्मार्ट सिटीज बनाना है। आई विल चूज अ प्लेस जहाँ पे बन रहा है ऑलरेडी, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। आई विल चूज अ प्लेस की उसके आजू बाजू कौन सा यूनिवर्सिटी है जो मेरे को ये स्पेसिफिक एरिया में अच्छा डिग्री दे सकता है, राइट? विच यूनिवर्सिटी हैज अ रियली गुड डिग्री फॉर इट, एंड उसमें क्या स्किल्स मैं लर्न करूंगा और क्या स्किल्स मेरे को आजू बाजू लेने पड़ेंगे, राइट? आई नीड टू टॉक टू पीपल, आई नीड टू नेटवर्क, आई नीड टू अंडरस्टैंड कौन से स्किल्स चाहिए। दीज आर ऑल्सो द एसेंशियल स्किल्स दैट आर रिक्वायर्ड व्हेन यू आर वर्किंग इन इंजीनियरिंग, राइट? एंड देन आई वुड सीक गाइडेंस और गो फॉर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। सो मैं वही यूनिवर्सिटी में ऐसे जाऊंगा कि देर इज प्रोक्सिमिटी टू ऑल दीज स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स। मैं वहां पे जाके इंटर्न कर सकता हूँ, मैं वहां पे जाके प्रैक्टिकल लर्निंग देख सकता हूँ, आई कैन नेटवर्क विद दोज राइट पीपल, right? And then eventually I can work in that area. So that's how I would plan it. That's how people should plan it. Uh, yeah, so planning for engineering is something like this. uh, any questions? I think end पे है ना? Yeah. Any questions? Online questions? दूसरा एक चीज इम्पोर्टेंट है कि बिकॉज कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, कि बहुत हॉट टॉपिक है, ब्लॉकचेन बहुत अच्छा है, एआई में बहुत अच्छा है, यहाँ पे बहुत अच्छा है, जरूरी नहीं है कि वो फॉलो करना है। ऐसा जरूरी नहीं है, नहीं करना है मतलब अगर इंटरेस्ट कहीं और है, अगर कोडिंग नहीं पसंद, तो एआई तरफ जाने की जरूरत नहीं है, राइट? एंड एआई इज नॉट कि अच्छा मैं इंजीनियर हूँ तो ही मैं कर सकता हूँ, या कोडिंग हूँ तो ही कर सकता हूँ। इट्स अक्रॉस पोजिशंस, अक्रॉस टीम्स, राइट? इट्स डिफरेंट टूल्स। तो just having a basic understanding of this, remember the T, right? Having basic understanding of a system की कैसे यूज करना है versus कि मेरे को सिविल में बहुत डीप इंफॉर्मेशन है और अंडरस्टैंडिंग है, दैट इज इनफ, राइट? तो जरूरी नहीं है कि जो हॉट टॉपिक है वहीं पे जाना है, वैसा ही करना है। यू हैव टू थिंक अबाउट कि मेरे को क्या पसंद है, खुद को क्या पसंद है। को ठीक है। आई गेस एनीवन दैट इज ऑनलाइन वो ऑलरेडी फॉलो कर रहा है हमें इंस्टाग्राम पे, सो दैट इज गुड। And next session will be on health sciences, right?